विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणी। क्लीममृतानन्दिनी भद्रां सदात्यानन्ददायिनी। श्रीं दैत्यशमनी शक्तिं मालिनी शत्रुमर्दिनी। तेजः प्रकाशिनी देवी वरदां शुभकारिणी। ब्राह्मीं च वैष्णवी रौद्रीं कालिकारूपशोभिनी। अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम्। मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते। सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसम्प्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम्। ओङ्कारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरी। सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा। पञ्चमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराहि। सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा। नवमी खड्गनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका। एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी। एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भयो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत। ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। दरिद्रो लभते लक्ष्मीं पुत्रः पुत्रवान् भवेत्। धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चारभयेषु च। शाकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्रनिपातने। राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं। स्तुवन्तु ब्राह्मण नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते। सर्वपापहर लक्ष्मी सर्वसिद्धिप्रदायिनी। ओङ्कारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययम्। विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणी। क्लीममृतानन्दिनी भद्रां सदात्यानन्ददायिनी। श्रीं
उच्यते सूर्यकोटि प्रकाशं चन्द्रकोटि संप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरी सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पञ्चमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराहि सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भयो विमुच्यन्ते नात्र कार्याविचारणा एकमासं द्विमासं त्रिमासं माञ्चतुष्टयं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीमपुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चारभयेषु च शाकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तु ब्राह्मण नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मी सर्वसिद्धिप्रदायिनी ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणी क्लीममृतानन्दिनी भद्रां सदात्यानन्ददायिनी श्रीं दैत्यशमनी शक्तिं मालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदां शुभकारिणी ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनी अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटि प्रकाशं चन्द्रकोटि संप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरी सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके
द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पञ्चमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भयो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीमपुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चारभयेषु च शाकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तु ब्राह्मण नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मी सर्वसिद्धिप्रदायिनी ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणी क्लीं अमृतानन्दिनी भद्रां सदात्यानन्ददायिनी श्रीं दैत्यशमनी शक्तिं मालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदां शुभकारिणी ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनी अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटिप्रकाशं चन्द्रकोटिसम्प्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरी सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पञ्चमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी
चत्रिमासं वाञ्छतुष्टयम् पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीम् पुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चारभयेषु च शाकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तु ब्राह्मण नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहर लक्ष्मी सर्वसिद्धिप्रदायिनी ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणी क्लीं अमृतानन्दिनी भद्रां सदात्यानन्ददायिनी श्रीं दैत्यशमनी शक्तिं मालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदां शुभकारिणी ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनी अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटिप्रकाशं चन्द्रकोटिसम्प्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरी सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पञ्चमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराहि सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भयो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं च त्रिमासं वाञ्छतुष्टयम् पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीम् पुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चारभयेषु
बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मी सर्वसिद्धिप्रदायिनी ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणी क्लीममृतानन्दिनी भद्रां सदात्यानन्ददायिनी श्रीं दैत्यशमनी शक्तिं मालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदां शुभकारिणी ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनी अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटिप्रकाशं चन्द्रकोटिसम्प्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरी सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पञ्चमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराहि सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भयो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीमपुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चारभयेषु च शाकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तु ब्राह्मण नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मी सर्वसिद्धिप्रदायिनी ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणी क्लीममृतानन्दिनी भद्रां सदात्यानन्ददायिनी श्रीं दैत्यशमनी शक्तिं
रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम् अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटि प्रतीकाशं चन्द्रकोटि संप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरी सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पञ्चमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराहि सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भयो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयम् पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीमपुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चाैरभयेषु च शाकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तु ब्राह्मण नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मी सर्वसिद्धिप्रदायिनी ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणी क्लीं अमृतानन्दिनी भद्रां सदात्यानन्ददायिनी श्रीं दैत्यशमनी शक्तिं मालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदां शुभकारिणी ब्राह्मीं च वैष्णवी रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम् अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटि प्रतीकाशं चन्द्रकोटि संप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं
नमोऽस्तुते। प्रथमं त्र्यम्बका गौरी, द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता, चतुर्थं सुन्दरी तथा पञ्चमं विष्णुशक्तिश्च, षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही, सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा, नवमी खड्गनी प्रोक्ता, दशमं चैव देविका, एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी। एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः, सर्वापद्भयो विमुच्यन्ते, नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयम्, पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत, ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः, जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः, दरिद्रो लभते लक्ष्मीमपुत्रः पुत्रवान् भवेत्, धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चाइरभयेषु च, शाकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्रनिपातने, राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने, ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं, स्तुवन्तु ब्राह्मण नित्यं, दारिद्र्यं न च बाधते, सर्वपापहरा लक्ष्मी सर्वसिद्धिप्रदायिनी। ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययम्, विष्णु